Okay, students, now we start with the refraction, laws of refraction. तो एक diagram बना लीजिए. This is a light ray which is traveling from medium 1 to medium 2. It is traveling from medium 1 to medium 2. I is the AB is incident ray, BC refracted ray, I angle of incidence, R angle of refraction. So first you draw this diagram. Light ray is traveling from medium 1 to medium 2 obliquely. How it is traveling? Obliquely. You should remember that light ray is traveling obliquely. तो obliquely travel करेगी तो it will change its path. And this is, we have shown the angle of incidence and angle of refraction is R. So what we can write, this is the normal drawn. And this is the interface. At the interface of light ray incident, and it bends through its original path. It bends through its original path. तो जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन. इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ? इसका मीनिंग ये है वी कैन ड्रॉ ऑल द थ्री, वी कैन ड्रॉ ऑल द थ्री ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर. हम एक प्लेन ऑफ पेपर पे सभी तीनों को ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल को, इंसिडेंट रे को. ऐसा नहीं है कि हमने प्लेन ऑफ पेपर पे इंसिडेंट रे ड्रॉ करी और नॉर्मल ड्रॉ किया और रिफ्लेक्टेड रे दूसरे प्लेन में जा रही है. दैट मीन्स इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि वी कैन ड्रॉ them on the plane same paper. We can draw all three on paper. That is the first law. Incident ray, refracted ray, and what you call it, incident ray, normal, and refracted ray lies in the same plane, lies in the same plane. और मैंने आपको इसका मीनिंग भी बता दिया. We can draw them on paper. So draw it and write it fast. That is the first law of refraction. AB, this is AB, incident ray. BC, refracted ray. Refracted ray means when it bends. When light ray bends, it is called refracted ray. I is the angle of incidence. Which incident ray? Which incident ray makes with the normal? Which incident ray makes with the normal? And R is the angle of refraction. Which refracted ray makes with the normal? जो नॉर्मल से एंगल बनाए जाते हैं उन्हीं को हम एंगल्स डिफाइन करते हैं. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. Have we drawn it? We have to cover a big syllabus in the coming 6 days. Evening you will have class extra. We have to take it. We have to cover the topic as well as backlog in the topic. Okay, so I am moving to the next slide.
This is the first one. Okay. Now we'll move to the second law. Second law, that is called Snell's law. That is called Snell's law. The ratio of sine of angle of incidence. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. The law is simply saying that sine I by sine r is sine I by sine r is constant. Sine I upon sine r is constant. Sine I upon sine r is constant. So आगे हम लिखते हैं for a given pair of media. For a given pair of media. For a given pair of media. Example air water ले सकते हैं, air glass ले सकते हैं, water glass ले सकते हैं, any pair of media. This constant is called refractive index. This constant is called refractive index. और आपको मैं बता चुका हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम म्यू से डिनोट करते हैं, either the refractive index is denoted by mu or denoted by n. दोनों ठीक है. So sin I by sin r, the law is very simple. The sin I by sin r is constant. This constant is called 1 mu 2. This constant is called 1 mu 2. और एक और बात आप याद रखें, light rays traveling from first medium to the second medium. तो ये जो 1 mu 2 है, इसे हम कहेंगे refractive index of second medium. Second medium with respect to first medium. With respect to first medium. With respect to first medium. So note down this. This law is called Snell's law. This law is called Snell's law. Okay. So you have noted down? Okay. ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं. तो दो मेन लॉ है रिफ्रैक्शन के. पहला लॉ है incident ray, refracted ray, normal lies in the same plane. That means we can draw on plane of paper. उसका मीनिंग है. Second is important, widely used in ray optics. Sin I by sin r is 1 mu 2, where 1 mu 2 is called refractive index of second medium with respect to first medium. अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गई जो हमें मालूम होनी चाहिए. 1 mu 2 can be written as, इसको ध्यान रखिएगा, 1 mu 2 can be written as equal to, ये तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है sin I by sin r, sin I by sin r, and it can be also written as v1 upon v2
V1 is the velocity of light in first medium. V2 is the velocity of light in second medium. Lambda 1 is the wavelength of light in first medium, whereas lambda 2 is the wavelength of light in second medium. और यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ. 1 stands for first medium and 2 stands for second medium. 2 stands for second medium. So this is a very important case. You should remember. और important भी है. Numericals में हम इसे use करेंगे. We will use in numericals. Your next week paper, you will do very good. This is my promise to you. But revise it and 2 times, 3 times. तो ये आपने नोट कर लिया. 1 stands for first medium, okay, and 2 stands for second medium. Lambda stands for wavelength and V stands for velocity. V stands for velocity. Principle of reversibility of light. Yes. तो इसको लिखेंगे. If the path of a light ray is reversed, then it retraces, follows its path, मतलब previous path. Now consider a light ray which is traveling from 1 to 2. If the path of light ray is reversed, then what will happen? Light ray will follow the previous path. जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी. There is no change in path. Retraces its path. Follows its previous path. So note it down. That is called the principle of reversibility of light. Principle of reversibility of light. Note it down. अब देखिए हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे. जैसे आई थी वैसे चली जाएगी. अब देखिए लाइट रे कैसे आ रही थी. अब आपको मैं बताता हूँ. लाइट रे पहले कहाँ थी? ए पे थी. ए से कहाँ आई? बी. बी से कहाँ गई? सी. तो वापस अगर हम पाथ को रिवर्स करेंगे उसी पाथ पर वापस जाएगी जिस पर वो आई थी. उसी पाथ पर वापस जाएगी जैसे वो आई थी. उसका पाथ चेंज नहीं होता. रिवर्स करने पर, पलटने पर वो सेम पाथ को फॉलो करती है. अगले आपको एक डायग्राम में और एक्सप्लेन करते हैं इससे. इट रिट्रेसेड इट्स पाथ. ये देखिए. अब इस लाइट रे को कंसीडर करिए. इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. तो आप लिख सकते हैं फॉर डायरेक्ट पाथ. फॉर डायरेक्ट पाथ 1 mu 2 equal to sin I by sin R. For reverse path, for reverse path
फर्स्ट पाथ में जब वो लाइट रे आई थी तो मीडियम 1 से कहाँ जा रही थी, मीडियम 2 में जा रही थी। जब रिवर्स कर देंगे तो वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी। ये डायरेक्ट पाथ हो गया। टू म्यू 1 इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। हमेशा आप याद रखिए, जब हम 1 म्यू 2 लिखते हैं तो मैं इसको फिर से लिखना चाहूंगा। अगेन आई विल राइट, वेट ए मिनट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 म्यू 2 साइन, फर्स्ट मीडियम में बनने वाला एंगल क्या है, देखिए आप, आई। लाइट रे फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, सेकंड मीडियम में बनने वाला एंगल क्या है, आर। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन साइन आर। नाउ फॉर रिवर्स पाथ 2 टू 1, मीडियम 2 टू मीडियम 1, तो 2 में, क्योंकि 2 से 1 में जा रही है तो 2 में बनने वाला एंगल क्या है, इसे पहले लिखेंगे साइन आर अपॉन साइन आई, लाइक दैट। वेट अ मिनट, this is equation 1, this is equation 2. What we do, 1 multiplied by 2, 1 mu 2 into 2 mu 1 equal to sin I by sin R into sin R by sin I। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। What we get it, 1. So 1 mu 2 into 2 mu 1 is 1. We can write 1 mu 2 is 1 upon 2 mu 1। आप इसको याद रखिए एंड नोट इट डाउन। तो जब म्यू को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो देखिए 1 म्यू 2 था, डिनोमिनेटर में आएगा तो उसका ऑर्डर भी पलट जाएगा, 2 म्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स जनरेट कर सकता हूँ। 3 म्यू 4, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा, 4 म्यू 3, 1 म्यू 3, 3 म्यू 1, लाइक दैट। सो प्लीज नोट इट डाउन। टू टू 1। So have you noted down this? So moving to the next slide. अब देखिए, consider a light ray तो पहले ये एयर से ग्लास में जा रही है, फिर ग्लास से एयर में जा रही है। ये एंगल्स हमने बता दिए, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस,
R1 angle of refraction. If this angle is R1, then this is also R1. Alternate angle. E angle of emergence. 1 से 2 में गई, एयर से ग्लास में गई, ग्लास से वापस एयर में आई। तो फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है। अगर मान लीजिए, सपोज करिए, अगर मीडियम चेंज नहीं होता, तो लाइट सीधी चली जाती। इट शुड हैव गॉन स्ट्रेट, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इट विल बेंड थ्रू इट्स पाथ। अपने पाथ को वो चेंज करेगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। देखिए, light rays traveling from air to glass, we can write sin I by sin R1, equation 1. Now light rays traveling from glass to air, so we can write G mu A. ग्लास में बनने वाला एंगल यहाँ पे क्या है, R1 sin R1 upon sin E, equation number 2. For reverse path, for reverse path, ये देखिए रिवर्स पाथ कर दिया हमने यहाँ से। अब रिवर्स पाथ में हम लिख रहे हैं एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, क्या करेंगे, ए म्यू जी साइन ई अपॉन साइन R1। तो पहले इक्वेशन लिखना सीखिए। अब देखिए, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखिए एंड 3, तो हम ए म्यू जी की दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ ए म्यू जी किसके इक्वल है, साइन आई बाय साइन R1 के। फर्स्ट इक्वेशन में ए म्यू जी किसके इक्वल है, साइन आई बाय साइन R1 में। और थर्ड इक्वेशन में ए म्यू जी किसके इक्वल है, साइन ई अपॉन sin I equal to sin E. So I equal to E. So we want to say that E equal to I. E equal to I. इसको नोट करिए। एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके पीछे रीजन है, वो रीजन आपको बताते हैं। ये देखिए, ये पहला इंटरफेस है जो एयर और ग्लास को सेपरेट करता है, ध्यान दीजिएगा। और ये दूसरा इंटरफेस है जो ग्लास और एयर को सेपरेट करता है। ये इंटरफेस 1 और बच्चों ये है इंटरफेस 2। 1 and 2 are parallel, so we'll get E equal to I. Wait a minute. In case of prism, it is not possible. In a special case, it is possible. So please tell me speedily whether you have noted down or not. You must tell me. Okay.
since interface 1 and interface 2 are parallel to each other. So angle of emergence equal to angle of incidence. Now 1 into 2 gives us 1 mu 2 into 2 mu 1. 1 mu 2 into 2 mu 1. Okay. 1 mu 2 की वैल्यू sin I by sin R1. इस 2 mu 1 की वैल्यू sin R1 upon sin E. But E is equal to I. So 1 mu 2 into 2 mu 1 is sin I upon sin I. Cancel. That's why we get it 1 mu 2 into 2 mu 1 is 1. Example here mu glass into glass mu A is 1. So we can write 1 mu 2 equal to 1 upon 2 mu 1. Similarly here we can write A mu G can be written as 1 upon G mu A. इसको आपको हमेशा याद रखना है. और एक और बात है, when E equal to I, then first and last media are same. Please note it down. This we will do later on. With the help of one question, we will put more theoretical understanding to it. So please note it down. Okay. Let's move to the next application. Refraction through a combination of several media. चलिए अब इसको करते हैं. ये मीडियम 1 है, ये 2 है,
ये थर्ड है और ये फर्स्ट है। तो देखिए तीन इंटरफेस है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर सेम। दिस एंगल इज I, this is R1, this is also R1. Reason is very simple, alternate angle. This angle is R2, then this is also R2. Again, alternate angle. This is I equal to E, I equal to E. अब आप देखिए 1 mu 2 can be written as sin I. See the diagram R1. Now light ray will travel from second to third. पहले फर्स्ट से सेकंड, फिर सेकंड टू थर्ड। सो सेकंड में बनने वाला एंगल देखिए R1, थर्ड में बनने वाला एंगल देखिए R2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, थर्ड टू फर्स्ट. जस्ट सी दिस, थर्ड में बनने वाला एंगल R2, फर्स्ट में बनने वाला एंगल E, but E is equal to I. So we have developed three equations. Now we'll multiply 1 multiplied by 2, 2 multiplied by 3, 1 mu 2 into 2 mu 3 into 3 mu 1 equal to sin I by sin R1 into sin R1 upon sin R2 into sin R2 upon sin I. अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा 1. So we get 1 mu 2 into 2 mu 3 into 3 mu 1 is equal to 1. So with the help of principle of reversibility, we are able to prove this. Note it down. First to second, second to third, third to again first. So we are moving to the next slide. So 1 mu 2 into 2 mu 3 into 3 mu 1 is 1. Example, air to water, water to
glass, glass to air. We can write A mu W into W mu G into G mu A is 1. तो देखिए फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल क्या है, सेम है. तो A mu W into W mu G, इसको हम लिख सकते हैं नीचे लाके A mu G equal to 1. So W mu G can be written as A mu G divided by A mu W. एयर को लिखा नहीं जाता है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू. अब देखिए इसको आप समझिए, 1 म्यू 2 को आप लिख सकते हैं, उल्टा लिखिए म्यू 2 अपॉन म्यू 1. तो डब्ल्यू म्यू जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, with respect to air, with respect to with respect to air. So with respect to air we can write it down. इसको नोट कर लीजिए. तो इसको याद रखिए आप, 1 म्यू 2 इक्वल टू उल्टा. अब जैसे देखिए डब्ल्यू म्यू जी को आप लिख सकते हैं, रिवर्स लिखिए म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू. तो जी म्यू डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिखिए, रिवर्स म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी. एंड प्लीज टेल मी वेदर यू हैव नोटेड डाउन और नॉट. तो आपको ये चीज याद रखनी है. अब आप सोच रहे होंगे कि ए म्यू जी को मैंने म्यू जी क्यों लिखा. जब कुछ लिखा नहीं होता है तो इसका मतलब होता है एयर या वैक्यूम. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब आप देखिए, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि जैसे ए म्यू जी है तो हम इसको सिर्फ म्यू जी लिखेंगे. विद रिस्पेक्ट टू एयर में एयर नहीं लिखते. ए म्यू डब्ल्यू है तो विल ओनली राइट म्यू डब्ल्यू लाइक दिस. तो हैव यू नोटेड डाउन, हैव यू नोटेड डाउन. तो अब हम इसको एंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में. पूरा आप इसको क्या करिए, रिवाइज करिए. अच्छे से आप इसको क्या करिए, रिवाइज करिए. टेक केयर, स्टे सेफ. ओके, थैंक यू टू एवरीवन.